Right. Good evening and welcome to Gunner Shot once again. Gunner Shot में आप सबका स्वागत है दोबारा. आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर ओवरहैंग के बारे में. दिस इज पार्ट ऑफ द कासा डायलॉग्स. दिस इज द सेकंड. ये कासा डायलॉग्स का दूसरा एडिशन है. पहले हमने किया था चाइना के बारे में विद जनरल गौतम मूर्ति. टुडे आई हैव विद मी लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. कुमार, with whom we're going to talk about the increasing nuclear overhang. Before I proceed further, I would like to welcome General P.R. Kumar on the show. Sir, welcome to the show, and it's a great honor for me that you are here alongside me. Thank you, General Shankar. We both go a long way. And good evening to all the very esteemed and very learned viewers. I look forward to a wonderful session. और आप लोगों का सवाल जवाब का भी बेखबरी से हमें इंतज़ार है. और मैं जनरल शंकर को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है इसका ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि यूक्रेन वॉर वगैरह वगैरह बाकी छोटे मोटे ऑपरेशनल और टैक्टिकल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसका ज़्यादा फिक्र है. पर इसी वजह के कारण जो न्यूक्लियर ओवरहैंग है उस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहमियत रखती है. एंड आई स्ट्रांगली फील lot more attention to be paid by strategic leaders, policy makers on the current nuclear architecture and nuclear environment. Thank you. Thank you, sir. And इससे पहले कि मैं इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊं, मैं बताना चाहता हूं जनरल कुमार जो हैं वो इंडियन आर्मी के डीजीएमओ रह चुके हैं, और मेरे साथ वो मेरे सीनियर कर्नल कमांडेंट रह चुके हैं जब मैं डीजीआरटी था. एंड हम दोनों का दोस्ती और एसोसिएशन गोज बैक एटलीस्ट अबाउट 50 years from the time when we were in India, right? And so it's that kind of equation we have. He's been my senior, and he's not only been the DGMO and the Colonel Commandant of Artillery, he's also been the Colonel Commandant of Aviation. He was also the DG of Aviation, and he's an experienced flyer also. So, and this whole business of the nuclear debate or the nuclear environment is quite dear to his heart. And इसीलिए मैंने आज उनको इधर बुलाया है. And I'm sure we'll have a great session. We'll tee off, sir. This is a new nuclear story. What's your take on it? That's a very interesting slide you made, Shankar. ये बहुत ही aptly ये story को बताता है. Basically बहुत कम समय में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यूक्लियर proliferation को रोकने के लिए स्टार्ट का जो ट्रीटी है वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है. क्योंकि आप लोगों को शायद हैरानगी होगी, और जिनको मालूम है आपको पता है कि इन द 1960s, इन द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, Russia and USA individually had over 30,000 nuclear warheads each. और उससे तो पूरी दुनिया 50 गुना बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकती है. सो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत पागलपन है, बल्कि पागलपन के हाई ऊपर ही उसका एक नाम बड़ा है, क्योंकि ये जो इतने सारा आर्सेनल रख के वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पूरे दुनिया का, खुद का तो होता ही है पर बाकी पूरे दुनिया का भी पूरा भ्रष्ट कर देता है इतना सारा न्यूक्लियर वेपन्स. सो ये जो स्टार्ट ट्रीटी है आर्म्स रिडक्शन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स न्यूक्लियर आर्म्स का रिडक्शन है 2011 में शुरू हुआ था, 10 साल के लिए. और आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप वाज नॉट कीन ऑन extending this treaty, but which was eventually extended by 5 more years by President Biden. Historically, if you go back, most of the other nuclear treaties which sought to control and manage the treaty was actually done away or put down by the United States. It was only on 25th February this year, that is just about less than a month ago, when Putin suspended
the New START treaty, saying Yeah. that, but at the same time उन्होंने ये भी बोला कि वो ट्रीटी के जो मेन चीजें हैं, डिप्लॉयमेंट, नंबर्स, हर चीज का वो अमन करेंगे, पर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं. वो दो चीजों के कारण है मेरे विचार में. दैट इज फर्स्टली, he felt that the NATO and led by the West, led by the USA, was taking him for a ride. And yes, in blunt words, you can say it was a sort of a nuclear threat that lead lines, if it is crossed, I will not stop and may even consider using nuclear weapons, for which he had to suspend the treaty. Second, he historically, before this itself, he felt that USA was actually breaking the treaty terms clandestinely in doing a lot of experiments, both technologically and even in different type of weapons. Interestingly, there are two main things about the START treaty which are very relevant and which is not really discussed. One is parity. That is the beauty about START. The second is MAD. Having reached a sum, by the way, the new START treaty is much better than the previous original START treaty in many ways. It further reduces the number of weapon systems. For example, it lays down deployed nuclear weapon systems, warheads, to only 1550 per nation between USA and Russia. And yeah, but that figure, sir, will never be reached, and we know that. Right. Yeah. So we'll before we go further on this, sir. While Putin has put a little spoke on the start, and ये होगा दोबारा शुरू, ये चाइना का भी they have changed their stance. So आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है. सही बात है. Right. So, but I want to put a few things in perspective, right? Okay. And we'll then take off from there, right? Okay. ये जो मैप देख रहे हो, इसमें आप देखेंगे कि कौन से नेशन के पास कितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं. ये एस्टिमेटेड 2021 का, क्योंकि इसके बाद का कोई देगा भी नहीं हमें. दिस इज द लेटेस्ट एज फार एज वी आर कंसर्न. हो सकता है कुछ इधर उधर कुछ फिगर्स अलग हो, बट मोटा मोटा तौर पर दीज आर द फिगर्स एज ऑफ टुडे. बात यह है कि मान लो 2 साल पहले या 1 साल पहले किसी को विश्वास ये नहीं था कि कभी परमाणु युद्ध होगा या हो सकता है. सब सोचते ठीक है, परमाणु युद्ध एक जमाने में होने के लिए देयर वाज हाई चांसेस, बट वो खत्म हो गया. बट ये यूक्रेन वॉर में दोबारा ये शुरू हो गया, राइट? सो एंड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीजें निकले आई हैं ये यूक्रेन वॉर में, जिससे राइट बहुत पहलू हैं ये न्यूक्लियर डिबेट के बारे में, जिसके बारे में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा. तो मेरा प्रस्ताव ये है आपके लिए कि हम ये जो आज का जो जितना बातचीत है, हम ये बात करेंगे ये न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर थ्रेट यूक्रेन में कैसे वापस आया और ये न्यूक्लियर इशू कैसे फोकस में आ गया, चाइना का क्या इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर आर्सेनल में, यूएसए का क्या रुख है और उसका बाद क्या परिणाम है, वो हम देखेंगे. पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं ये न्यूक्लियर थ्रेट यूक्रेन में कैसे हुआ और आप इसके ऊपर थोड़ा लाइट डालें. हाँ, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो यूक्रेन का वॉर फिजिकली जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, वो मैं ये तो नहीं बोलूंगा वो साइड शो है, बिकॉज एक्चुअली टोटल वॉर हो रहा है जहां ऑल डायमेंशंस ऑफ वॉर, ना केवल एयरक्राफ्ट, ना केवल गोला बारूद, ना केवल वेपन सिस्टम्स, टैंक, सब लड़ाई लड़ रहे हैं. वो जो नॉन काइनेटिक, मतलब नॉन लड़ाकू जो है, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव डायमेंशंस ऑफ वॉर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, सब चल रहा है. पर एक्चुअली यदि उसका ऊपर से स्ट्रेटेजी को स्टडी करें तो आप समझेंगे कि ये एक्चुअली एक ग्रेट गेम चल रहा है बिटवीन द टू सुपर पावर्स ऑफ यूएसए एंड रशिया. Yeah, that's लड़ाई दोनों के बीच में है.
No, that's a fine thing. You see, what I'm trying to get at is this whole story restarted with the with Russia posing a nuclear threat to NATO, Absolutely. right? And saying, look, if you interfere in this war in Ukraine, I will use, मैं अपना The sky न्यूक्लियर is वेपन्स limit. इस्तेमाल करूंगा, हाँ, राइट? absolutely. और In दूसरी fact, बात यह है, उन्होंने क्या किया है कि अगर आप न्यूक्लियर ये यूक्रेन का जो लड़ाई देखेंगे सिंपल तौर पे, उन्होंने ये जो उनका अपना परमाणु हथियार और ये द न्यूक्लियर थ्रेट, उनका मिसाइल थ्रेट और कन्वेंशनल थ्रेट को मिला दिया। मेरे ख्याल में ये पहली बार ये हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कन्वेंशनल थ्रेट हैज बीन कॉन्फ्लेटेड विद न्यूक्लियर थ्रेट एंड इट हैज बीन बिल्कुल। प्रेजेंटेड, राइट? हाँ, और ये एक नया मॉडल है ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर थ्रेट और पोजिंग अ न्यूक्लियर थ्रेट. I think बिल्कुल। that has triggered a whole lot of things. If you can spend a couple of minutes on that, and then we will go to the Chinese angle. ओके, जैसे आपने बताया कि जब रशिया ने देखा कि अभी पूरा वेस्ट यूक्रेन के साथ है और उनको पता लगा कि जब ये अभी न्यूक्लियर बैकग्राउंड और उनकी जो न्यूक्लियर शक्ति है उसको लेकर दोनों चीज इस्तेमाल करेंगे, कंपेलेंस भी, डिटरेंस भी करेंगे और कंपेलेंस भी करेंगे। डिटरेंस इस तरह से कि उन्होंने बोला है कि रेड लाइन तो ऑलरेडी पार कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने यूक्रेन को अटैक किया है। पर उसके अलावा यदि नेटो ने लड़ाई में ज्वाइन किया या उन्होंने हद या रेड लाइन फॉर न्यूक्लियर अटैक तो उन्होंने एक्चुअली प्रोक्लेम नहीं किया है, लेआउट नहीं किया है, पर वेगली, हमेशा न्यूक्लियर थ्रेट एम्बिगुअस और वेग रहता है। उन्होंने बोला है इफ द नेटो एंड यूएसए फिजिकली जॉइन द वॉर or cross certain red lines in terms of attacking Russia, because now with weapon systems you don't have to, you can attack Russia, the mainland, from any source in any direction in multifarious ways, and that would be a red line. And then he's already alerted his nuclear forces after basically announcing the nuclear threat. He has rescinded the start and added on it by alerting his nuclear forces, and they are all on alert. Right. And So this is that an means there's important a point new. to me. इसका मतलब है कि there's a new nuclear dimension, बिल्कुल, right? And this nuclear dimension in warfare and in global affairs affects all of us. इसके एब्सोल्युटली, ऊपर हमें नया सोच विचार करना पड़ेगा, बिल्कुल, राइट? इससे पहले कि हम नया सोच विचार के बारे में बात करें, राइट, मैं ये थोड़ा आप बता सकते हो कि हमें ये भी पता है कि चाइना अपना आर्सेनल इंक्रीज कर रहा है और बिल्कुल। यूएसए भी अपना वेपन्स को मॉडर्नाइज कर रहा है. मैं आपको मैं एक नंबर्स दे दूंगा. जैसे अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज आल्सो ऑफ 22 का प्रोजेक्शन है यूएसए का. यूएसए had a lot of weapons which were a little old generation, हाँ, and now ऑलमोस्ट they are 60 years old। yeah, now they are upgrading it to the latest systems, right? Which is the point of I wouldn't say concern, but the point which we have to take into focus, Yeah, right? to हमें add to, ध्यान देना पड़ेगा कि I think ये starting from Obama, they have yeah actually allocated $2 trillion for the dollars modernization of US forces. to modernization of the US nuclear forces. Absolutely. Okay. Similarly, China, जो ट्रेडिशनली इट हैड ओनली अ स्मॉल न्यूक्लियर आर्सनल और वो लैंड बेस्ड आर्सनल था, जैसे हमने बट आजकल क्या है, दे आर गोइंग इनटू साइलो बेस्ड आईसीबीएम्स. जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया, इट इज अ पिक्चर ऑफ अ साइलो. ये दिस इज इन समवेयर इन जिनजियांग बताया जाता है, बट इट कुड बी एनीवेयर एल्स आल्सो, एंड दे हैव मोर साइलोस. They are also going in for road mobile ICBMs. Yes, They are also going in for strategic nuclear submarines. And they are absolutely. going in for air-based nuclear capabilities. In effect, क्या है कि they are making a triad. Triad का मतलब यह है कि air capability, undersea capability, sea capability, and land capability. Right? Sea and land being almost the same. So they are having a triad. You find Russia has the maximum nuclear warhead still, right? And they can have they're a huge nuclear power. USA is modernizing its considerable nuclear power, and ये जो स्टार्ट है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है,
वो उसका कोई इट्स अप इन द एयर, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें चाइना का क्या विचार है, वो क्यों अपना आर्सेनल बढ़ा रहे हैं और उनका क्या सोच विचार है। जब से जी आए हैं, और आपको मालूम होगा कि यू ऑल वुड हैव रियलाइज्ड दैट चाइना इज नाउ कंसिडरिंग इटसेल्फ as a global power. When it become talking of becoming a global power, it also has to become a global nuclear superpower. But currently, you can rate only USA and Russia. Where are the warheads, number of warheads and launchers? Please remember that launchers and warheads are both equally important. And या START controls these. सो दैट मीन्स, आई मीन यू मेड ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई लाइक टू हाईलाइट इट, सबको बताना Okay. चाहता हूँ कि किसी के पास एक परमाणु हथियार होना ही इनफ नहीं है, उसके साथ जिस तरीके से उसको दूसरे शोर तक पहुंचाना, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। इसका मतलब आप Absolutely. हवाई जहाज के माध्यम से दे सकते हो, एक मिसाइल के जरिए आप भेज सकते हो, या इट कुड बी ऑन सी और अंडर वाटर, राइट। Absolutely. तो दैट्स द और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच चाइना true. इज ट्राइंग। या बोलिए। मैं आपको ऐड करना चाहता हूं जो जनरल शंकर ने बताया, बहुत ही स्पीड से, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी, केपेबिलिटी और न्यूक्लियर जो फिजाइल मटेरियल है, ट्रिटियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, काफी सारा मसाला ऑलरेडी है। दे आर नॉट बाउंड बाय स्टार्ट एट ऑल। सो नॉट ओनली आर दे moving in leaps and bounds in creating number of warheads, they are also creating different type of warheads. For Warhead, yeah, interestingly, USA and Russia cannot have more than one nuclear warhead in a silo. But the Chinese under DF-41 and even under in DF-21, ये दो type of nuclear missiles हैं, 10 multiple warheads रख सकते हैं। और जैसे जनरल शंकर ने बताया, गोबी डेजर्ट के बगल में और जिंजियान एरिया में 230 साइलोस बन रहे हैं, उसके फोटोग्राफ्स हैं सबके पास। हो सकता है उसमें से 50% खाली हो, पर उनको भर के हर एक न्यूक्लियर मिसाइल में 10 री एंट्री न्यूक्लियर परमाणु डाले जाएं, तो उनके जो नंबर्स हैं यूएसए और रशिया से कंपेयर हो सकते हैं। करेक्ट। और सो राइट, इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। यू हैव, ये चाइना ने जो मल्टी मिसाइल साइलोस बना रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो डिलीवरी सिस्टम में उन्होंने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़ोतरी किया है। Once you have hypersonic technology, which you can put it and you can nuclearize hypersonic technologies, and you have cruise missiles, you have submarine launched missiles, and if you can put it कि multiple silos से अगर आप इसको उड़ा सकते हो, या आपका जो पूरा क्या आर्सनल है काफी पावरफुल हो जाता है, राइट। ये सही है कि नहीं मेरे जो बोल रहा हूँ, बिल्कुल। राइट। और एक तो और इस राइट, पर मेरा बात दोबारा मैं एक और उसी को मैं दोहराना चाहता हूँ। ये माना जा रहा था पिछले 5-6 साल तक पहले कि भाई परमाणु हथियार आर नॉट यूजेबल, इसका इस्तेमाल कोई करेगा नहीं, राइट, इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए तो ये स्टार्ट वगैरह शुरू किया कि इसका क्यों हम अपना पैसा लुटा रहे हैं इसके ऊपर। इसके बावजूद चाइना ने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाया, क्यों? इसके 2-3 वजह हैं। एक तो जैसे मैंने फिर से बताया कि वो सुपर पावर होगा और एट पैरेलल टू यूएसए और रशिया के साथ डील करना चाहता है, तो उसका पास भी जो आर्सेनल होंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स और लॉन्चर्स होंगे, ऑलमोस्ट एट पार होना चाहिए। नंबर 2, रशिया उसका अभी परमानेंट दोस्त नहीं है, उसको अमेरिका के साथ भी लड़ हो सकता है, रशिया के साथ भी कठिनाइयां हो सकती है। सो दोनों को मिलना चाहिए। तीसरा, उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है। और चौथा, ये एक पॉलिटिकल टूल है जी के पास, जिससे वो अपने अपने देशवासियों को और दुनिया को ये दिखा सके कि वो इतना पावरफुल है कि वो दूसरे देशों को ना केवल उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़े, पर वो दूसरे देश को बोलेगा यदि आप ABCD हमारे साथ नहीं है, या हम जो चाहते हैं वो करना नहीं चाहते हैं, जैसे ग्लोबल साउथ है, जैसे अफ्रीका है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया नेशंस हैं, तो हम आपको थ्रेटन कर सकते हैं न्यूक्लियर से भी, क्योंकि
इंडो पैसिफिक में हम यूएसए से बहुत ज्यादा काबिल भी हैं और काबिल हैं, हमारी राइट कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उनसे ज्यादा है। राइट। और उसके तो बाद हम बाद में आएंगे उसके ऊपर क्या असर होता है। राइट, तो मैं आई जस्ट वांट टू रीड आउट व्हाट यू नो हैज एनालिसिस in Carnegie Mellon in one paper, their website. I read this. मैंने सोचा कि मैं आपसे आपके साथ ये शेयर करूं। ये बोल रहे हैं कि under its current leadership, China's continued rise is coupled with growing disputes with Western countries over issues like human rights, democratic values, rule of law, and international norms. These developments have led China's leadership to conclude that China faces a new geopolitical reality. जो जनरल कुमार बात कर रहे थे कि क्या है reality in which Western countries are deliberately creating trouble, उनको तंग कर रहे हैं और मेकिंग अप एक्सक्यूज टू डेमोनाइज एंड कंटेन चाइना, कि उनको चाइना को बांध के रखने की कोशिश हो रहा है कि वेस्टर्न कंट्री से, ये उनका अंदेशा है। China fearing the country's rise could challenge the West dominance in the international system. Believing that Western hostility is a result of bigger structural changes in the international system, China feels the only solution is to further consolidate its own power until Western countries acknowledge the new reality that China's success and strength are beyond doubt. इसका बिल्कुल मतलब वो चाहता है, चाइना चाहता है कि अपना परमाणु हथियार के जरिए सब को बताए कि मैं एक सुपर पावर हूं और सब मान जाए कि चाइना एक नया सुपर पावर है, राइट? ये है ये इनका मोटा मोटा सोच विचार, राइट? और एक और बहुत इंटरेस्टिंग उसका साइड इफेक्ट है। ये इसी ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक रीजन के साथ अपने न्यूक्लियर आर्सेनल टेक्नोलॉजी, क्योंकि न्यूक्लियर जो आर्किटेक्चर है वो खाली डिलीवरी और वॉरहेड्स नहीं है, उसका It's also इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशंस है, एंटी command and सैटेलाइट control. मिसाइल्स है। Yeah, और उन्होंने जनरल शंकर ने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है उन्होंने, जिसमें सैटेलाइट्स की दरिया हाउस कर सकता है न्यूक्लियर वेपन। सो फ्रॉम स्पेस China is space-based weapons. developing the capability of destroying objectives or areas in the land. अभी क्या Yeah, है, रशिया, अमेरिका एक एग्जांपल ले लो। अभी अमेरिका को ना केवल रशिया को काबिल अपने पास रखना है या उसको इक्वल करना है न्यूक्लियर थ्रेट से, पर चाइना को भी करना है। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, बाई चांस रशिया और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो गया और किसी ने उसको फर्स्ट स्ट्राइक किया, उसको रिटेलिएट करते हुए दोनों की आर्सेनल कम हो जाएगी और चाइना एक सुपीरियर पावर हो जाएगी। तो क्या होगा, ऑलरेडी रशिया और चाइना, क्योंकि तीनों की परमानेंट फ्रेंडशिप तो है नहीं, दूसरे देश के लिए और अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका ये मतलब है चाइनाज राइज के कारण जो ओरिजिनल टू स्टेबलाइज हो चुके थे स्टार्ट से, अभी अनसेफ फील करते हैं, क्योंकि वो अब बेसिकली रशिया अमेरिका को कर रहा था और अमेरिका रशिया को चैलेंज कर रहा था और यार इक्वलाइज कर रहा था। अभी चाइना को भी इक्वलाइज करना है। तो यदि right, चाइना और रशिया अपना आर्सेनल को बढ़ाएंगे, चाइना जो है बोलेगा अरे ये तो और बढ़ रहा है, तो चाइना भी बढ़ेगा। और आगे जनरल शंकर इसमें शायद डिस्कस करेंगे हम, तो बाकी देश पीछे तो नहीं रहेंगे, उनके ऊपर भी इफेक्ट right. आएगा, वो बाद में बात Okay, right. आपने बोल दिया कि बाकी डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट आर द नॉक ऑन ग्लोबल इफेक्ट, इसका परिणाम क्या है। अभी पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड नए न्यूक्लियर एस्पिरेंट्स हैं, नए नए देश हैं, बहुत देश हैं जो चाहते हैं कि वो भी परमाणु हथियार पाए। करेंगे। बिल्कुल। और खास एक तो करके इसमें ऑलरेडी ये इन तीनों को, ऑलरेडी ऑन है ये हाँ, पहले भी काफी लोग काफी देश चाहते थे कि वो परमाणु हथियार को इस्तेमाल करें और उनका टेक्नोलॉजी लें। आज के दिन उसमें सबसे इन द फोरफ्रंट इज ईरान, बिल्कुल राइट? अपार्ट फ्रॉम ईरान, इन द अर्लियर डेज, पहले दिनों में लिबिया, सीरिया, सऊदी अरेबिया, राइट, और या सऊदी साउथ अरेबिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये भी चाहते थे कि वो अपना परमाणु हथियार दे गेट होल्ड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर वेपन्स। बिल्कुल और तो और आजकल, आज के दिन
साउथ कोरिया और जापान, दे आर फीलिंग थ्रेटेंड कि भाई चाइना अगर वो अपना परमाणु हथियार का तादाद बढ़ा रहा है, तो हमें भी खुद का अपना, दे शुड हैव देयर हाँ, ओन बिकॉज हो सकता है न्यूक्लियर रशिया वेपन्स। अमेरिका के पास उतनी कैपेसिटी ना हो, वो तो अपना या रशिया को भी देखेगा, तो हाँ, उनके पास विल अभी उतनी कॉन्फिडेंस विल शायद नहीं विल है। टॉक अबाउट दिस, विल जस्ट टॉक अबाउट दिस इन 2 मिनट्स। ओके। वो इसीलिए है कि मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि साउथ कोरिया एंड जापान आर अंडर ट्रीटी विद यूएसए, that USA will give nuclear cover to South Korea and Japan. बट आजकल जो सोच विचार साउथ कोरिया में और जापान में ये है कि वाई शुड वी डिपेंड ऑन यूएसए, हम क्यों यूएसए के ऊपर निर्भर हों, हम क्यों अपने आप अपना परमाणु हथियार ना बनाएं और हमारा परमाणु हथियार खुद के साथ हम करें, राइट। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि ताइवान के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इट ऑपरेट न्यूक्लियर, राइट। आप रिएक्टर्स। सोचिए, राइट, रिएक्टर्स, पावर रिएक्टर, अगर कल के दिन ताइवान भी एक बेसमेंट में एक बॉम्ब रख के वो बाहर निकाले, तो उसका क्या परिणाम होगा वो हम बाद में बात करेंगे। बट आई, विद दिस एज अ बैकग्राउंड सर, मैं एक इसके ऊपर देखना चाहता हूं, आप बात कीजिए द न्यूक्लियर ट्रायंगल वर्सेस द न्यूक्लियर हेक्सागन। आई गिव एन इंट्रोडक्शन टू दिस होल स्टोरी व्हाट इट इज, एंड देन आप, आई वांट योर व्यूज। लोग मानते थे कि न्यूक्लियर ट्रायंगल, ये अगर आप ये नक्शे में देखोगे, द न्यूक्लियर ट्रायंगल इज बिटवीन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। और लोग सोचते थे कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ, ये बताया जाता था 5-6 साल पहले, क्या 2-3 साल पहले तक भी। पर आजकल जो है, आप दैने देखिए, देयर इज अ न्यूक्लियर हेक्सागन कमिंग आउट, राइट। एंड दिस न्यूक्लियर हेक्सागन इज, ये चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और द ईस्टर्न रशिया के ऊपर एंड द पैसिफिक के ऊपर इट हैंग्स। इसमें क्या क्या कौन से देश हैं? चाइना, रशिया, यूएसए, जापान, कोरिया, और दोनों कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये देश हैं। तो इसके इसमें आप संदर्भ में आपका क्या विचार है? आप जो बोल रहे थे अभी, इसको थोड़ा एलेबरेट कीजिए। जनरल ओके, कुमार, प्लीज कैरी ऑन। स्टार्ट विद द ट्रायंगल। या विचेवर, आप जहां ओके, जिससे बात करना चाहते ये हैं। ट्रायंगल ऑब्वियसली अभी जो अभी तक हिस्टोरिकली क्या हुआ है, चाइना और इंडिया दोनों ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। दोनों की ये पॉलिसी थी कि हम किसी न्यूक्लियर रेस में नहीं आएंगे, हम अपना इफेक्टिव क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक केपेबिलिटी, इसका ये मतलब है यदि किसी न्यूक्लियर पावर स्टेट ने हमारे ऊपर हमला किया, उनका जो फर्स्ट स्ट्राइक हम उसको एब्जॉर्ब करके हमारी जो रिटेलिएटरी सेकंड स्ट्राइक केपेबिलिटी की काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि हम उनको थ्रेटन करें। तो ये जो वैल्यू टारगेट्स हैं वो बेसिकली पॉपुलेशन सेंटर्स, मेन सिटीज होगी, क्योंकि दो टाइप ऑफ टारगेट होते हैं, एक काउंटर वैल्यू और एक काउंटर फोर्स। काउंटर वैल्यू के लिए सेकंड स्ट्राइक हमारी जो छोटी न्यूक्लियर पावर है जैसे पाकिस्तान और ले एक मिनट, जनरल कुमार साहब, आप बताइए व्हाट इज काउंटर वैल्यू और व्हाट इज काउंटर फोर्स, क्योंकि हो सकता है बहुत हमारे, काउंटर राइट। वैल्यू टारगेट्स होते हैं जिसमें नेशनल वैल्यू है, जिसमें पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं, या जो पूरे देश में क्रिटिकल है, बहुत सारा पॉपुलेशन है, उसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज, सिविल कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी। काउंटर फोर्स वो हैं जो मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, जैसे एक हमारी जो कोर है जो लड़ाई के लिए दुश्मन के इलाके के अंदर जाएगी, उनको अटैक करने से हमारा तो जाने से पहले ही हमारी जो स्ट्राइक फोर्स है उसका बर्बादी होगा या लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये काउंटर फोर्स है, बट काउंटर फोर्स में वो भी शामिल हैं जहां हमारी लॉन्चर्स और मिसाइल्स दोनों डिप्लॉयड राइट, हैं, ओके, क्योंकि हमारे दैट को आई थिंक इज अ, that's a ओके गो great explanation. So let's focus on the nuclear triangle quickly, and then we'll go to the So very nuclear quickly, hexagon. India so far was focusing on Pakistan because that was the unstable neighborhood. And while we have a border issue, it was never outstated in terms of turning it into a nuclear conflagration because of the stance of both the countries. Yeah, However, with this expansion, what you can call surge expansion of China, not only in technology but in type of warheads, and also propagating their belligerence
and virtually also saying that they are willing to go to war. Basically, they have stated they are willing to go to war to even entirely redeem and capture Taiwan. But that is possible even against India because they have claimed large areas of land, तो including इसका Arunachal. मतलब ये जो न्यूक्लियर ट्रायंगल आप जो बोल रहे हो, इसका मतलब ये न्यूक्लियर ट्रायंगल है, पहले हाँ के बनस्पत ज्यादा, इट्स हाँ, बिकम मोर और क्योंकि डेलिकेट. चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल साथ साथ राइट. हैं, तो एक हाँ. दूसरे के ऊपर बिल्ड करके वो इंडिया के सो ऊपर इस फ्रेश, सो मोर इसका लाइव मतलब थ्रेट हो गया है। करेक्ट, इसका परिणाम ये है कि हमें एक नया सोच विचार करना पड़ेगा, बिल्कुल, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. ओके। राइट. और ये जो जिसके बारे में हेक्सागन हम जो बाद है में बात एक्चुअली करेंगे. ऑलरेडी, आप थोड़ा ये न्यूक्लियर हेक्सागन के बारे में बात कीजिए. ओके, आपका एक्चुअली क्या विचार आपने है? सब कुछ बता दिया है, पर ये जरूर है कि अभी जो एन नंबर ऑफ नेशंस जो हैं उसमें बढ़ने का स्वभाव बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर एक कैटलिस्ट बन गया है, जहां उनको बहुत सारे देशों को यूएस के जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो कैपेसिटी है टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट चाइना, वो थोड़ा कम हो रहा है। और आपने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो हेक्सागन है, क्योंकि पूरा जो पॉलिटिकली, जियो पोलिटिकली, इकोनॉमिकली जो पूरा पावर है वर्ल्ड का, वो एशिया में शिफ्ट हो रहा है। So the राइट. pivot has shifted to Asia, एशिया. and so सी, the you made a very important point. The pivot has shifted to Asia. मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, एंड विच इज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप चाइना देखिए. China is now at one end, it is involved with a nuclear triangle. It has got a nuclear foe at one end of its, right? और दूसरे सिरे में उनका वेस्टर्न ईस्टर्न फ्रंट में it has got a lot of countries. It is facing a nuclear hexagon, right? अगर आप पूरा देखेंगे, ये जो पूरा कहानी है, इसमें एक देश है पूरा इफेक्टेड है 100%. इसका वो है चाइना. बिल्कुल और इसकी वजह से ये इनका सोच विचार ज्यादा परमाणु हथियारों की ओर बढ़ेगा. बिल्कुल अगर चाइना का सोच विचार परमाणु हथियार के ऊपर और ज्यादा बढ़ेगा, तो हमें भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या इस चाइना, व्हाट काइंड ऑफ अ थ्रेट विल चाइना पोज टू इंडिया, राइट? बिल्कुल। और आपने इससे पहले बहुत साफ बोला था कि पहले सोच विचार था कि न्यूक्लियर वॉर्स विल नेवर बी फॉट एंड कैन नेवर बी वन, बट नाउ वन थिंग्स आर चेंजिंग चेंजिंग. because if there is an overwhelming preponderance of both conventional and nuclear dominance of one country, like say China, then it compels you as also deters you from even against your national interest. या. And India, like I mentioned, India is also now got a lot of aspirations of being a regional ग्लोबल power, पावर. and and so it is not purely for self-defense. We have to start thinking as a regional power, and Yeah, we'll apart we'll get to that. We'll get to from, that. We'll just get to that. Right. I'll get to right, that. Okay. But I want to first concentrate on Pakistan. पाकिस्तान के ऊपर मैं दो शब्द बोलूंगा, आप उसके बाद आप विचार दीजिए. okay, देखिए, आज के दिन पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, राइट? और वो पर परमाणु, इट्स अ न्यूक्लियर नेशन, right? It's an unstable nuclear nation. Okay. Now, in this context, is there a case? Two scenarios I would like you to talk of. Is there a case that if you want to stabilize Pakistan, that you denuclearize it, like the way Ukraine was denuclearized in the late 90s? So that is one option. Second, if Pakistan remains a nuclear nation, why should it remain a nuclear nation? What are the forces which will ensure that it will remain a nuclear nation? You can answer whichever question, whichever way you want. that's a very interesting one. Yeah. I would say that right now it's a very complex question you have No, asked, I understand that's a very complex question. and I may know not have a simple, straightforward it's answer, not but a simple. I can tell you in a very straightforward way. Yeah, Pakistan by itself is very unlikely to give up its nuclear arsenal. correct. So, Number one. so Number the two, chances of it being made to give up its nuclear arsenal, like Ukraine was done, you feel is very low. very low. Okay. And secondly, it is also reasonably dangerous to forcibly only focus on the nuclear arsenal and retrieve it or neutralize it or
take it under safe custody. या जो हम नॉर्मली ना बात करते हैं ना डिफैंग पाकिस्तान, ये डिफैंगिंग का कहानी थोड़ा खाब है. So it will require a global action led by all the three superpowers and aided and abetted by India to virtually compel Pakistan to firstly stop any more production and in some probability cap it and neutralize their system. Yeah. I don't know. And it is possible. Given the current morass or trends and the way Pakistan has been, the way Pakistan is being cornered to, is being compelled to do certain actions. So it is possible. So we leave it at that. The second thing is, right, this is my view. Pakistan will never give up its nuclear arsenal as long as the army is intact, because the nuclear arsenal keeps the army in power. Right, it's also ये जो परमाणु हथियार पाकिस्तान के लिए there's an internal factor also, there's a huge internal factor to keep it right. और दूसरा बात यह है कि जब तक उसके पास परमाणु हथियार है, उसको भी मानसिक तरीके से उसको पता है कि इंडिया उसको अटैक नहीं करेगा. ये इनका मानसिक प्रॉब्लम है, ये दुविधा है, मानसिक दुविधा है ये, राइट. एंड इट गिव्स देम लॉट ऑफ स्टेक इन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स. प्लस द फैक्ट, लाइक आपने जैसे बताया, और पाकिस्तान और चाइना, जब तक इनके पास, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, और चाइना का तो अलग बात करेंगे, राइट, इट कैन एक्ट टुगेदर इन कंजंक्शन विद ईच अदर. Absolutely. So virtually जब तक collusion. Yeah, so in collusion, so this is to think that we will be able, that Pakistan will give up its nuclear arsenal or China will aid Pakistan or force Pakistan to give up its nuclear arsenal, is वो तो ख्वाब है, वो कभी होगा नहीं. At least for the current middle few years, for the medium term, it is unlikely. It's unlikely. And so we are in a situation which I want to now focus on, कि हमने देख लिया कि हमारे चारों तरफ क्या स्थिति है, किस तरीके से ओवरऑल ग्लोबली इट्स इंक्रीजिंग. देयर इज नो डाउट कि इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स न्यूक्लियर आउटलुक. ठीक है, तो मैं ये तीन चीजों के ऊपर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप थोड़ा आपका give your views on no first use, जो हमारा stated policy है, the triad capability which we are acquiring and what should be the contours of that, and then how should we reorient our nuclear posture with the rise of China and the rise, I won't say rise of China, rise of Chinese nuclear power. So you can start with anyone you want. Which would you like to start? Yeah, बोलिए. Yeah, you're on. You can speak. Yeah, sorry, I'm now on mobile. My no problems. No problems. My lights went off. Yeah, you're first class. You're absolutely fine. So, would you like to touch NFU, or would you like to have triad capability? You'd like to talk, or the reorientation of the Indian nuclear posture? I missed the last 30 seconds, but I would like to first talk of NFU. Okay. My personal opinion is that the no first use has lasted and tested the times. I think it has worked. There is one thing which I feel those who are experts on this issue don't factor in is, it doesn't mean zero or full. The no first use, and then if we are attacked, now that it has been slightly altered, if any of our forces are also attacked, even in a foreign land, we will use massive retaliation. That is a slight alteration to our nuclear stance or our nuclear policy. So one important point जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो हमको massive retaliation के बदले minimum stroke graduated response से नहीं रोकता है. जरूरी नहीं है कि हम हमेशा massive ही दें, क्योंकि कभी-कभी ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस आ सकता है जब दुश्मन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज हो, जहां हम 10 बार सोचेंगे कि हम मैसिव रिटेलिएशन या काउंटर वैल्यू उनके शहरों में डालें कि नहीं, क्योंकि उसके रिपरकशंस अलग हैं. सो आई फील नो फर्स्ट यूज
should always be, there must be ambiguity in it, but it has lasted and it has So let's seen put the it test this of way. time. Yeah, so let's put it this way. You could say that the no first use could be conditional no first use, Yes. right? And And as to we are build a bit of ambiguity in the whole story. So the absolutely, first point which you make is that, which I agree with you, that the time for no first use, unconditional no first use, is gone. absolutely. Okay. And I will give you a very interesting observation, human observation. In any case, just like America does not believe totally on any issue. Like, for Yeah. example, America is, I won't call it in an open forum, is the big culprit in many things. Take the biological warfare, take the chemical warfare. You will Yeah. be, Even UNCLOS, obviously, you're aware that they've not all the signed on the five UNCLOS Security also. Council members have not signed the biological and the chemical See, treaty. yeah. And the Not reason only is that, not only that, America has even not signed the UNCLOS. एब्सोल्युटली सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द मेन रीजन जो उनका जो रैशनल है उनका जो रीजन है वो बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं हम जो भी एग्रीमेंट करेंगे उसका पूरा उसके काबिलियत से और इंटेग्रिटी से उसे फॉलो करेंगे और हमें दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं है इसलिए हम साइन नहीं करेंगे So, और so, वो so नहीं हम साइन we नहीं have करेंगे to. तो वो दूसरे जो लोग हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एक ट्रीटी लोग बहुत लोग बोल रहे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल शंकर को मैं बोलूंगा थोड़ा 2 मिनट से बात करें वो हो सकता है उसकी पूरी जो वैल्यू है उसकी जो पूरी बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव कैपेबिलिटी है इतनी बड़ी है शायद परमाणु से भी ज्यादा है वो Right. पूरा देश को बदल सकता है पूरी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हर चीज ऑटोमेशन करके पर Right. यूएस बोल रही है तो इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में जो रिसर्च है उसके ऊपर हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा देश एडवांटेज ले लेगी नाउ Right. कमिंग बैक टू दिस न्यू Let's इंडियाज put. न्यूक्लियर स्टैंड आई फील India, because of so many other priorities, and we are still not economically so strong, we should focus on a credible, safe, and which can a survivable second strike capability and Right. triad. Obviously, it has to be So a you triad. need a triad, We right? need And we are not get going into a towards that. nuclear race and try to match now even China. We are not in a position to do so, but we must start working on a credible, survivable second strike capability, which will force our anybody threatening us to think million times. Differently. Right. I have another viewpoint. I won't say another viewpoint, a conjoint viewpoint to what you have said. You have said a credible second strike capability with a triad, right? Yeah, I also feel you need to have a credible, you have to have a mix of nuclear and conventional forces with a credible non-contact deterrence capability. You see, this is what we have seen, right? Yeah, this is what we have seen in Ukraine. In what have we seen in Ukraine? In Ukraine, what you have seen is a nuclear capability mixed with credible non-contact deterrence capability, conventional absolutely. weapons. So I think there is a requirement for us to look at the lower end. You have so what you have said, a triad capability, assured second strike capability is one way of going. The second way of going is definitely right, this To have you a know very strong mix conventional capability. conventional capability compatible with the lower end of a nuclear capability, right, which I think is very important. Okay. And I would also like to so with this kind of a thing, is there a need for reorienting our whole thinking from Pakistan oriented thinking to China oriented thinking? Like you said, I think so. It that bet, Absolutely. I think we are right. already going about it in that manner. Yeah. And I think both politically, diplomatically, within the armed forces, we are already know that who is the more serious threat and a more credible threat. And we have even positioned and deployed our armed forces accordingly. But at the same time, we have to have obviously a capability of
fighting a or a 2.5 front war. Front war. But there are mechanics of it which is not Right. within the scope of this talk. Okay, good. I think we've covered quite a distance. Can we take on a few questions from our audience? We will, right? And first thing is, I'd like to thank Pratik Naga for this donation he's made to us. Jai Hind, Pratik. Thanks a lot. Pratik is from US. He's a Okay. student in US. Yeah, Yeah, he's I a can great make guy. out Right. dollars. Yeah. Now I'll go over a few questions which are there. Some tough questions, some interesting questions. But we'll go through them. Okay. Sir, say okay. Let's talk with the. So Kotari says, sir, if the Indian Army ever moves into POK as a last resort, should things there get bad, akin to East Pakistan in 71, would Pakistan actually use nukes, as the Kashmir issue is an existential problem for them? Yeah, your views. This is egg and Chicken and the the egg. chicken and the egg, in the sense, if he uses it, it is existential for him because he will stop existing. And Yeah, but at the same time, he has got a very deliberate, chaotic nuclear policy of being totally a mad nuclear policy where he says, I am capable of bringing fire on myself. yeah, So he actually, पाकिस्तान का एक आदत है कि वो अपनी जो अनरिलायबल नेचर है या उसकी जो ब्रावाडो नेचर है या फुलिश ब्रावाडो है, उसके ऊपर वो अपना जो पॉलिसी के ऊपर एनकरेज करता है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है. पर हमने उसको बहुत बार देखे हैं, काफी सारे जो बालाकोट हुआ है, हर जगह हुआ है, 71 वॉर हुआ है, सब कुछ हुआ है, और हमें पता है कि उनके जो लीडर्स हैं और वगैरह हैं इतने भी फुलिश नहीं है, क्योंकि in terms of nuclear parity, there is nuclear parity, and the destruction which will be caused to him will be much, much more than what can be caused to India. We are a much yeah, larger country. We have much more counter value objectives and counter force. And keeping in mind the international community as also the mutual capabilities and geographical depth and size and population of our country, I have a feeling we will be in a position to call his bluff, because ultimately, yeah. His if nuclear he bluff wants has to to be win called. the war and use something, he will not be able to use what he calls Azad Kashmir and we call POK, because उसी का जो अभी उनका जो इलाका है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. मेरे ख्याल से वो खाली एम्प्टी थ्रेट होगा, एक ब्लफ Yeah, होगा. right. That's great. Okay, there is another question. Ask General Raghunandan is a regular who keeps coming on all my shows. Ask General, will there be another race for nuclear miniaturization and its delivery mechanism like it was in Cold War? So I'll take it on because this is with the last question which we discussed. Look, as the new trend which the Ukrainian war, जो यूक्रेन वॉर में दिखाया गया है, वो है कि टू मिक्स द कन्वेंशनल विद द न्यूक्लियर. जब आप न्यूक्लियर और कन्वेंशनल को मिक्स करके क्रेडिबल डिटरेंस लाना चाहते हो, तो यू हैव टू मिनिचराइज द न्यू वॉरहेड्स. You not only have to miniaturize the warheads, you have to make them specific and make them tactically relevant, and so that you don't, thresholds are not crossed. दूसरी ओर पे you want to have in a silo multiple warheads. Again, you need to miniaturize. So miniaturization is a ongoing program with anyone, right? Okay. I'll also add that one of the main worries of the United States for strategic force commander, which he announced, I don't think more than a week ago, was the This slightly more advanced miniature capabilities of China. China. He's more Yeah, worried about them, saying that if we do not catch up on AI and miniaturization, we will be at a disadvantage. yeah. So it is Now on. Already the race is on. you've spoken about AI and miniaturization. Let me amplify it. आपने पहले भी, what will AI do? AI gives you battlefield transparency. It enhances battlefield transparency. आप देख सकते हो दुश्मन को बहुत साफ तरीके से वो कर क्या रहा है और क्या उसका एक्शन है. उसका टारगेट जो आप उसको अटैक करना चाहते हो, उसका क्लैरिटी आ जाता है दृश्य, और उसको
किस तरीके से परमाणु हथियार या नॉन परमाणु हथियार से डील करना है वो आ जाता है। और उसके बाद आप जब हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल या री एंट्री मिसाइल सिस्टम्स आप बेचते हो, तो उसका कंट्रोल करना एआई के जरिए बहुत आसान हो जाता है। और उसको टारगेट को पहचानने के लिए एआई का बहुत यूज होता है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एआई, hypersonic miniaturization is a very deadly combination which we are going to see in future, right? I'll leave it at that. उसके बाद right, ये क्वेश्चन है राजीव नारायण से। India would need to move to the path of MIRV warheads head on existing missiles. This would be a way to balance China in future. Your comment, sir. इससे पहले कि आप कमेंट दोगे, मैं सबको बताना चाहता हूं, राइट, सबसे पहले कि व्हेन जनरल पीआर कुमार वाज द डीजीएमओ ऑफ इंडियन आर्मी, जनरल राजीव नारायणन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन वाज द एडीजीएमओ, राइट। ये अच्छा है कि वो जो इनके नंबर 2 थे वो, राइट, और पूरा इंडियन आर्मी का जो मिलिट्री ऑपरेशन को देखभाल करते थे, वो एक सवाल पूछ रहे हैं अपने सीनियर को कि वुड इंडिया वुड नीड टू मूव टू द पाथ ऑफ एमआईआरवी वॉरहेड्स ऑन एग्जिस्टिंग मिसाइल्स। आपका The only comment I'll make is it is a like in any offensive or defensive operation, there are very many options. Each has its pros and cons, and this is very much one of the options which India will examine. It has got implications. It has got implications of violating. We are not part of any treaty. However, if at a later stage, this is one of the conditions that there will be no MRVs in silos as part of the START, which is in a way will become redundant because China is no longer joining it. But as one of the options, which is both economical with tremendous amount of strategic value and capabilities, it is very much on the cards. So मैं भी अपना 2 शब्द बताना चाहता हूं इसके बारे में, राइट। जब हमें अभी अनिवार्य है कि वी हैव टू रीलुक एट द होल मिसाइल system. I mean, I would say the missile and the nuclear, viewpoints. What is our stance? क्या हमारा रुख होगा? दोबारा देखना पड़ेगा इसका पूरा। अगर फर्स्ट यूज ही कंडीशनल बनाना चाहते हो, मिनिचराइजेशन के ओर जा रहे हो, जाना अनिवार्य है, you have to look at mixing the conventional with the nuclear. That's a new trend which has started. And you have to go and counter चाइना का जो बढ़ता हुआ न्यूक्लियर स्टांस है। So I think it is time for us to start thinking of MIRV. और एक और बात है जो राजीव को बिल्कुल मालूम है कि इसका खाली ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज से संबंधित नहीं है, इसका डिफेंसिव भी है। MIRV बहुत काम आता है बैटलफील्ड मिसाइल डिफेंस में। जब ऊपर से बहुत बरसात आती है तो MIRV आपको एक चाहता भी चाहिए, आपको एक चाहता भी चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का, राइट। वही जो आप बोल रहे हो वो आपका नंबर 2 ने भी ये बोल दिया, ठीक है ना। आपका डेप्यूटी ने ये बोल दिया। मेरे को तो आज नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि आप दोनों के बीच में बात हो रहा है, मैं बीच में आके आपको मीडिएट कर रहा हूँ, एंड आई एम गुड। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कल उनके साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करूंगा, तो आप उनके आग के बीच में दखल अंदाज कीजिए, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राजीव का, शुड इंडिया आल्सो हैव अ कंडीशनल एनएफयू लाइक चाइना? वो तो हमने पहले बता दिया, इसका कोई डाउट नहीं है। मैं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। ये हम कंडीशनल वगैरह क्यों ज्यादा बात करते हैं? कोई किसी का विश्वास करता है? Has America trusted Russia or China on anything which they have done? Similarly, do you think if we write an NFU, the country which is our adversary will 100% believe it? He still is ambiguous because finally, when push comes to shove, by the way, Xi Jinping and the foreign minister has made this statement about 10 days ago, saying that though we have NFU and we will never attack a non-nuclear country and we will never start a nuclear attack, it says that however when conditions get tough, you can rule out nothing. So I think that is the case even with us. So why should we? It is up to the other person to I think nuclear once you possess nuclear weapons, its employment is ambiguous.
The whole story is on ambiguity. Nuclear ambiguity is the name of the game, right? Correct. Okay. And by the way, I mean, look. Let me put it across. जो हम बात कर रहे हैं, you actually are generating nuclear ambiguity. Yeah. When two generals of the Indian Army, one who's a DGMO and another a DG artillery, and has a discussion, three-way discussion with the ADGMO, ex-ADGMO of the Indian Army, you're already generating some kind of ambiguity. I mean, let's put it there. There's no doubt about it. So ambiguity is the name of the game, and we have to live with it, and we have to transpose it. Okay. The next question is that how believable are the figures of nuclear warheads, especially of those countries like Pakistan? And second question is it true Pakistan has only low yield fission type nukes, whereas India has high? Right. Uh, Look, you can't put an actual figure on any number, but generally you can make an estimate based on the capability of their nuclear reactors to generate fission material, right? And by this you do know you might be off about 5 6 nuclear warheads, but that is part of the game. Unless, of course, China has given them that much fission material or nuclear material to make more bombs. Okay. The second thing you come to know that how you track the nuclear warheads is through the missile capability. How many missiles they can have? How many? There are methods. I'll not come out in the open. So we are reasonably clear how many Pakistan has, to some with some error. Now, Pakistan has, I mean, to say that Pakistan has low yield fission type nukes only is not correct. Definitely, Absolutely. they have both, right? So, ये मान के चलिए उनके पास सब कुछ है, ओके? और जो उनके पास नहीं है, चाइना उनको देगा, ओके? Right. Uh, he says, asking this, sir, because it is very heartbreaking to look and hear people making wrong comments on the nation security issue. These things that external and internal elements do affect the national morale. देखिए, मैं आप कुछ बताऊंगा, मैं उसके बाद जनरल कुमार से भी आई आस्क हिम टू पिच इन. Let's be very clear. India is a strong nation. Just because some fool says India is weak, yeah, whoa, don't believe it. We are fundamentally a strong nation. We have come through a lot of problems in our 75-year history. We have been attacked 4 times. We have never had a peace dividend. We have had a lot of problems. We have been under sanctions. We have been isolated, right, by the same USA. Right, we have been under technology control regimes. We have surmounted all this to reach a stage where we are able to, where people count you as a regional power, and in some cases people count you even as a global power. Okay, so let's not, don't worry about this. Let's have the confidence If that, I may just add one yeah, statement. yeah, please, that's what This I is, want you to add. that is, firstly, Jay, that this is only the start. Believe me, nothing has actually happened. What is going to happen from now on is going to be much worse. Because in this geopolitical world, it exists on 4 C's: cooperation, competition, confrontation, and conflict. As India gets stronger and treads on toes, or has more friends, or eats some other people's space, some other people's energy, though we may not be hegemonistic or we may not need anybody else's mind, there are always a group of people who will club together or isolation, who will to remain and keep their space. There'll always be competition and confrontation, and hopefully never a conflict. So we as a nation with aspiring ambitions of becoming a global power, and certainly why not, must be ready to face all sort of challenges. Yeah, that's great. Okay, then the next thing is Raghunandan asked General, should India go for thorium-based warheads as we had reserve in India, and it will give us a lead to further research in its reactor and its enrichment? Your comment on it? Look, thorium-based warheads are still out of the equation. We'll not get into it, but because the thorium cycle has to be kick-started by the plutonium availability, which we still don't have. So we don't have enough plutonium to kickstart a thorium cycle for energy. So making a warhead out of it is far back. So we'll leave it at that, right? Okay, then
Late Mrs. Indira Gandhi wanted to launch preemptive strikes on Pakistan back in the 80s when she got a whiff about its nuclear plans. Don't know why it was never followed through. Well, you just made a statement, we'll take it. Right? Okay. Yeah, then, right. What is this comment? Badrakali, one thing is very clear considering world of even so far, the nuclear arms are not a guarantee of nation's integrity. Yeah, this all completely ambiguous. Okay, right. Now John Doe is a very intelligent guy. He reads quite a bit and he asks a lot of questions. Back in the Okay. day, I used to think all officers had to swear some oath of allegiance after retiring, since it was so rare to hear from them. There would be the odd article here and there or in journal. Oh no, John, that's gone. Oh, jamana gaya. Yeah, yeah. Anything you have to say, sir? As long as it is not actually classified information which is not available in open domain, I think Yeah, it is better to know something from somebody who knows than because somebody else who doesn't know anything will give you only more rumors. yeah, yeah. Right. And this is what I was discussing with someone also, John and सबको कि भाई मैं ये गनर शॉट का जो चैनल है मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ with lot of intelligent people who are in the armed forces to come and express their views on various issues, right? And you'll find this happening on a regular basis. Okay, okay. The last comment I have is from Shet. Sir, has AI helped enhance the destructive effect of strikes by either Ukraine or Russia in the current war? Look, let me put things in perspective. AI is an aspirational technology. It has not yet proven itself. The first public use of AI came out with Chat GPT. When I first used Chat GPT about 4 months back, you could get only wrong answers. Today, Chat GPT has come to something like 50% correct answers. There are methods by which people say you get a lot of good answers, but I'm not not not, still not involved. for this kind of a thing, right? I'll just follow Not that. not not for operational purposes, and definitely not for nuclear issues. Okay, and AI has not reached the stage or where you can actually depend on it. Okay, small If I ai may, small AI is okay. Okay, for small purposes, but for use of nuclear, I don't think we are still there. Your views, sir? but After this we can. if I may add, Shankar, maybe he's also having his question is having a non-nuclear conventional context. So I would like to just give a small example. AI, that it is not a specific application. AI can be used from medicine to farming to military Yeah, to everything. equip warfare. Now, if you look at the shooter to sensor capability and the decision support capability, AI is fantastic. If you feed the correct software and everything, the artificial intelligence builds on it and helps the man who's taking a decision. And there are many types of AI. One is where the human man is in the loop. There is a fully automated decision with its own imperatives and its advantages and disadvantages. So in this Ukraine war, the sensor shooter feasibility, the West has almost used automation and also artificial intelligence to some degree. Like I totally agree with General Shankar, it is not totally AI, but it is happening in its small ways. Where that is why it is one of the most important technologies which every country is scrambling to master. Get hold of, right? Yeah. I think so. We've had a terrific discussion. मैं आपसे बहुत आभारी हूँ कि आप आए, आपका टाइम बिताया इसके ऊपर, एंड मैं जितने आज पार्टिसिपेट किया उनसे भी आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा, जेन्युइन सवाल हैं, राइट? मैं यही बोलूँगा लास्ट में, आप सब अपने दोस्तों को बताइए कि और आके हमारे साथ शरीक हो जाएं इस गनर शॉट में. हम ये
लगातार गनर शॉट के ऊपर हाई क्वालिटी एनालिसिस करेंगे, इसमें मेरा मेरा वादा है आपके लिए। और कल जो हम करेंगे ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी विद जनरल नारायणन, हम वो कर रहे हैं ऑन यू नो कंप्यूटर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। और उसके अगले दिन हम विश्लेषण करेंगे of the two sessions which happened in China. What's the analysis of the two sessions? Because I feel there's something very interesting coming up there, right? There's two sessions and the 20-party Congress in October. If you add these two, there's something new happening in China, but that I'll talk day after tomorrow. With this, thank you, sir, and thanks for coming. And if you have a last thing to say, please carry on, and then we'll say Jai Thank Hind. you, Shankar, for inviting me. I am privileged and honored. And thank you, viewers. The questions were very interesting, and I thoroughly enjoyed myself. Thank you, and good night. Thanks, sir, and Jai Hind. Jai Hind.